देखो अभी, for any vector a1i plus a2j plus a3k with 10 mod ai less than 1, I equal to 1 to 3, which of the following statement are true? A equal to maximum of mod a1 mod a2 mod a3, that is less or equal to mod a. Mod a less or equal to 3, maximum mod a1 mod a2 mod a3. Which of the following statement is true? वेक्टर ए क्या दिया है और 10 mod ai लेस देन 1 ये गिवन दिया है i इक्वल टू 1 टू 3. तो अभी दोनों ट्रू है कि दो में से एक ट्रू है या दोनों फॉल्स है, तो चेक कर दो. ठीक है, देखो लेट द वेक्टर बी ए क्या दिया, वेक्टर बी ए गिवन दिया. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय mod a, that is root of a1 square plus a2 square plus a3 square. We are given the condition 10 mod ai less than 1 for I equal to 1 to 3. This means mod ai is less than 0.1. Mod ai less than 0.1 क्योंकि डिवाइड बाय 10 करेंगे इसको तो 0.1. For each component this condition defines the range of the values for each component for the vector. However, the truth of the statement depends on the fundamental properties of the vector magnitude and component values, which holds for any real values of a. So this condition is specific restriction but does not alter the general inequalities we will derive. So let analyze each statement. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो तो क्या दिया, गिवन दिया है मैक्सिमम मॉड ऑफ a1 a2 a3 मॉड के अंदर लेसर इक्वल टू मॉड a. m इक्वल टू क्या है, इसको m सेट करेंगे. ठीक है, डिफाइन द मैक्सिमम I belongs to क्या 1 to 3. So we have mod of ai less or equal to m. Squaring both sides and mod of ai क्या है, each mod of ai क्या है लेस और इक्वल टू m लेंगे क्योंकि m क्या है उसका मैक्सिमम. So define squaring both sides, which is a valid since both sides are non-negative. We get ai square less or equal to m square. Now consider the square of the magnitude of a. So mod of a square equal to a1 square plus a2 square plus a3 square. Since a1 square greater or equal to 0, a2 square greater or equal to 0, a3 square greater, क्योंकि ये square है ना, this is always greater or equal to 0. So we can say that any single term ak square is less than or equal to the sum of the square. So k belongs to 1 to 3 जी लिया तो ak square क्या हो जाएगा लेस और इक्वल टू a1 square plus a2 square plus a3 square, that is equal to mod of a square. इसका मतलब क्या हो गया, k be the index for which mod of ak is a maximum. So mod of ak equal to m, then ak square equal to m square. From the inequality ak square less or equal to mod of square, तो m square less or equal to क्या गया mod of a square. तो taking square root of both sides, तो m is less or equal to mod of a. So therefore maximum mod of a1 a2 a3 less or equal to mod of a. This is a true. Clear. नेक्स्ट चेक करेंगे बी ऑप्शन में. तो बी ऑप्शन के लिए देखो अभी ए ट्रू है, क्लियर हो गया. बी ऑप्शन के लिए देखो, बी क्या है, mod of a less or equal to 3 maximum of this one, तो इसको फिर से m सेट करेंगे. We know that mod of ai क्या है less or equal to m. क्लियर. Squaring both side ai square less or equal to m square. क्लियर. नाउ कंसिडर द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब mod a स्क्वायर क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो mod a स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट इज लेस और इक्वल टू 3m स्क्वायर. mod of a स्क्वायर लेस और इक्वल टू 3m स्क्वायर. तो a mod of a क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3m स्क्वायर, मतलब mod of a लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3m. और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी 1.7m. तो mod of a क्या हो गया, स्टेटमेंट बी इज mod of a लेस और इक्वल टू 3m. यही है ना स्टेटमेंट बी, क्योंकि स्टेटमेंट बी वहाँ पे क्या दिया है mod of a less or equal to 3 क्योंकि m मैक्सिमम मतलब root 3 less or equal to 3 and obvious it follows that root 3m less or equal to 3m. So combining the inequalities, mod of a less or equal to root 3m less or equal to 3m. So mod of a less or equal to 3 maximum mod of a1 mod of a2 mod of a3 is true. Both statement a and b are fundamental inequalities relating to Euclidean norm L2 norm and maximum norm L2 norm, that is different thing. These inequalities hold true for any vector a belongs to R. मतलब specific condition that this one. The condition just specific subset vector for which these generally true statements are also applied. मतलब both A and B are true. Clear? Next.